this is your paper. It's yours? I don't want to speak. Please very please. I think we need you camera that you can also media hold the out of class and argue it. Relax. This is not supposed to be a formal session. So, first of all, Kulumka everyone, Chibaya, and Namaskar. I don't have much to say. I think Shailesh has said almost everything which is required. The most important thing, please, आज मीडिया के फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में खत्म हो गई। शैलेश से समझिए, मैं हिंदी में बोलूँगा इंग्लिश में। What is better? English or Hindi? English? English? Because you have to learn all languages. Whether it is Bangla, or English, or Urdu, Hindi, the more languages we learn, better for us. It is better because जो हमारा कहानी है वो एक लैंग्वेज में नहीं, हर लैंग्वेज में रहना है। बहुबली में तो कितना लैंग्वेज में रिलीज हुआ, right? So the reason I am starting this, where I want to help you all, my young generation. Why do you think I want to help you? Can I ask you a question? Can anyone answer why I want to help you? कोई जवाब देगा? नहीं, खड़ा होकर नहीं पूछ सकता। सोसाइटी, तो अपने में सोसाइटी। Okay, that's one good answer. Any other thing? What is it? Make greater Tripura. Greater Tripura, not Bikram. Greater our Tripura state. Yeah, I want to make a state bigger. That's one thing. What about the ladies? Why? I think she wants to say. So that's the Sahas Lekha, Rajesh Lekha. It will create a greater identity of our state. Greater identity. See, you have to be confident first of all. What's your name? Sir, my name is Brishti Tripura. Brishti Tripura. Where are you from? Sir, I am from Shabha, South. Shabha. Okay, South. That is not quite far. Now, why do you think I am doing this? Sir, हमारे स्टेट को जो नेशनल इंटरनेशनल में ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं और सिविल सर्विस तो लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे स्टेट के यूपीएससी एग्ज़ाम बहुत टफ है जो हम कर ही नहीं सकेंगे। तो आई थिंक हमारे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम आपकी हेल्प से एक एग्ज़ाम के माध्यम से एक बहुत सबके इंस्पायर कर सकेंगे आगे की जनरेशन को ये एग्ज़ाम पास करने के बाद। ठीक, तो आपने बोला अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, आपने बोला ग्रेटर ट्रिपुराइजेशन, you said what did you say? You said what was your It could create a great identity of our greater identity of the आपने बोला है for again upliftment and हम एग्जांपल बन example. Can I tell you why I am doing this? ये सब बोलने वाली बात है। अच्छा, ये सब बोलने वाली बात। I am only doing this because I love all of you. It's as simple as that. यहाँ पे अगर आप एक दूसरे को प्यार करते हैं ना, then you don't need to say all these big dialogues. Shailesh just said, we don't need speeches. We need honesty.
I want to see you all happy and successful. And when you are happy and successful, you can spread more happiness and you can bring more happiness to all of us. जिंदगी में कुछ भी करना है, you will have to actually start by loving each other. So first, we love our country, but we don't love citizens. We love the idea of India, or we love the idea of Tripura, but we don't. Bengalis have a problem with Pikrasas, Pikrasas have a problem with Bengalis, Hindus have a problem with Christians, Christians have a problem with Hindus, Muslims, Hindus, Christians, Buddhists. So we all love Tripura, but we don't love the people inside Tripura. We all love India, but we are divided because of our short-term narratives. So the first thing you have to do is start loving each other. Then again, some people say, easy to say, difficult to follow. But every day you can have a new start. Every morning when you wake up, Allah tells you, okay, natural. You all use computer, recycle the pen, delete the tension, delete the garbage, and start fresh. Because जब आप टेंशन में हो, तो आप ठीक काम नहीं कर सकते. आपके अंदर अगर दुख है, तो आप खुशी बांट नहीं सकते. अगर आपके अंदर दर्द है, तो आप किसी को हंसना नहीं सिखा सकते. और मैं चाहता हूं कि you all inspire first yourself. Your biggest challenge will be your mother or father. They will say, "अरे टाइम बर्बाद कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब देखो." गवर्नमेंट जॉब मिले या ना मिले, पहले आपको आपका सम्मान आपके पास मिलना चाहिए. सेल्फ रिस्पेक्ट. Now you all people think that I am a Maharaja, Bubagra, king, whatever you want to call it. But what good a so-called king if his people are poor? What good for a so-called Bubagra when his people are suffering and I see no hope in them? So I feel nice when I help people. I may not be as rich as Mr. Adani or Jyotirladitya Scindia or other kings from Tripura, but other kings from so-called erstwhile families of India. But I know that my people are fond of me or love me, and if I can give you a chance to have a better tomorrow, why not start in every aspect? So here I am helping you in civil service. Some of you may become IS officers, some of you may become TCS, some of you may become in judiciary, some of you may not even do government job. But this coaching class will help you become better people, confident people. And मैं आपको एक बात बोलता हूँ, the day you have confidence, no? The day you are confident as human beings, then it is very difficult to defeat. You have to win, and to win, you don't need पैसा. पैसा हम आएगा जाएगा, लेकिन अगर हिम्मत है तो गरीब भी अमीर को हिला सकता है. इसके लिए हमेशा गरीब का विश्वास को तोड़ने का एक तरीका होता है. अरे कॉम्प्रोमाइज कर लो, कुछ मिल जाएगा, कुछ ले लो, लेकिन आपका जो असली अधिकार है कभी नहीं है. तो टुडे आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, क्या होता है, एक पियोन जो ऑफिसर पे चेंबर के बाहर बैठा होता है, वो जो खुद उसी गांव से जिस गांव से आ, वो आपको डिस्क्रिमिनेट करता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं अब पियोन बन गया हूं, अब मैं सबसे ऊंचा. पॉलिटिशियंस को देखिए आप, जो कल तक कुछ नहीं था उनके पास, आज जब वो एमएलए बन गए या मंत्री बन गए, तो उनको लगता है कि मैं
भूल जाता है कि उसके गांव में आज तक एक कुआं भी नहीं पानी पीने के लिए। तो हमको क्या बदलना है? हमको बदलना है कि हमको जीतने के बाद, ऑफिसर बनने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि हमारा क्या कंडीशन था जब हमारे पास कुछ नहीं। बिकॉज मेरे जैसे भी, आपके जैसे भी बहुत लोग हैं who do not have the opportunity. So first learn to love your people, learn to love yourself. Have that confidence that अगर मैं साइकिल से भी अगर ऑफिस जाऊँ तो कोई आपको शर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि what's your name? Yeah, what's your name? My name is Purna Devarma. Purna Devarma. Purna, suppose you become an IAS officer, right? Or a TCS officer. If you walk to work or go on a cycle also, you remain Purna Devarma. If you go in a like Scorpio or a Mercedes also, you still remain a Purna Devarma, because that will be your strength. I don't even mind going in autos because I am Pradyot Manikya. It does not make a difference if I go in a Mercedes, if I go in a helicopter, or I go in an auto, or I cycle, because that is a transformation. But what is inside is the real person. So never forget that your real strength comes in remaining humble, approachable, and focused. The focus should be happiness and bringing happiness. Okay, that should be your. Everybody has different motivations in life. सबका एक अलग लक्ष्य होता है। कोई को लगता है कि अगर पैसा आएगा तो मैं माँ के लिए कुछ खरीदूंगा, कोई कहता है कि आई वांट टू डू सम शॉपिंग फॉर माय सेल्फ, कोई कहता है कि मैं अपने छोटे भाई या अपने सिस्टर के लिए कुछ खरीदूंगा, किसी को लगता है पैसा आएगा तो मैं बचा के रखूंगा, मैं घर बनाऊंगा। सबका अलग अलग वजह होता है, लेकिन पैसे से आप कुछ देर के लिए खुशी को ला सकते हैं, लेकिन आप कभी मत भूलो, पैसे से आप दोस्त को नहीं खरीद सकते। You can never buy friendship with money, and you can never buy loyalty with money. And if you want loyal friends, loyal people, then money has to be secondary. कल रिलायंस to meet me, Reliance, I have met मुकेश अंबानी। बहुत लोग मुकेश अंबानी से मिले हैं, तो मैंने मुकेश अंबानी को, उसके लोग आए कल, मैंने बात किया, उन्होंने भी किया, उनके टॉप लोग, खूब लोगों ने देखा उनको, मैंने कैंसर हॉस्पिटल और समथिंग इन स्पोर्ट्स। मैंने उनको एक ही बात कहा, आई एम नॉट इन स्पोर्ट्स somebody an Olympian from Tripura. Now many people say, मैं तो न्यूज़ में पढ़ते रहता हूँ, प्रद्योत तो कॉम्युनल है, बंगाली के खिलाफ है। मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल दिया बीपा का। मैंने कहा अगर उसका अच्छा ट्रेनिंग होता तो वो फोर्थ पोजीशन में नहीं, टॉप पोजीशन में आती। थोड़ा सा उनका चुप गया, लेकिन थोड़ा सा अच्छा ट्रेनिंग होता, फैसिलिटीज होता तो शी वुड हैव बीकम गोल्ड मेडल। वी विल बी प्राउड फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि मैं जानता हूं कि स्पोर्ट्स में आप सिर्फ कम्युनिटी के डेवलपमेंट, आपको रीजन को डेवलप करना। लेकिन ये बात मैंने बोला, ये बात मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि मीडिया को तो कहानी बेचना है, मीडिया को तो सेंसेशनलिज्म लाना है, और ये बोलने से तो महाराजा का इमेज दिखवाने के सामने अच्छा हो जाएगा। तब हम महाराज को राक्षस में बोलेंगे तो लोग क्यों न्यूज़पेपर पढ़ेंगे? ये एक पूरा प्रोसेस है, क्योंकि मीडिया को भी लगता है कि नेगेटिव न्यूज करने से लोग ज्यादा पढ़ते हैं, और मीडिया ये क्यों करता है? क्योंकि हमको गलत खबर में, किसी के दुख में, किसी
किसी के नफरत में हमको अच्छा लगता है। ये हमारा सोसाइटी का डिके हुआ है। That's the reality of life. अच्छा, मैंने कहा कि कैंसर हॉस्पिटल करो। मैंने बोला कि आप स्पोर्ट्स को डेवलप करो, फुटबॉल हो, एथलेटिक्स हो, बैडमिंटन हो, ओलंपिक्स के लिए स्पोर्ट्स को डेवलप करो। मुझे एक आदमी ने एक व्हाट्सएप भेजा, आपने अंबानी को बुलाया है और हमारा जमीन लेंगे। मैंने अंबानी को बुलाया नहीं जमीन देने के लिए, मैंने कहा कि हॉस्पिटल बनाओ, स्पोर्ट्स को डेवलप करो। जमीन में ऐसा देने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये जमीन किसका है? हमारे लोगों का। और छोटा पहले से छोटा स्टेट है, तो मैं ऐसा करके अपना जमीन क्यों दूं किसी को? अच्छा, पैसा मैं जियो को तो नहीं दे रहा हूं, पैसा मैं रिलायंस इंडस्ट्री को नहीं दे रहा हूं, मैं रिलायंस के फाउंडेशन को दे रहा हूं जो CSR काम करता है और उनको पैसा खर्चा करना पड़ता है CSR के लिए। तो you all should be informed. How will you do it? You will only be informed if you look for the right news. But if you are not going to look for news, if you are not going to search for knowledge, people will fool you. People will divide you. People will misguide you. And I want our society to come up in such a way that we feel proud. You know, to my Bubagra people, I want to tell you, I don't want to see guns in your hand. I don't want to see you have lathis in your hand. I want to see you having a pen. You know, हमको बहुत दुख लगता है जब लोग हम लोगों के स्पेशली यूनिट का मजाक उड़ाते हैं। दिल्ली में लोग स्पा वाली चिंकी, my women are the most beautiful women. You know, the most beautiful women, but they make fun. And I want these people जो आज मजाक उड़ा रहे हैं, कल आपको सल्यूट करें। उसमें मेरा वकील होगा कि मैंने देखा है मेरे लोगों का मजाक उड़ाया गया। अब मैं देखना चाहता हूं कि वही लोग मेरे बुरे या लड़के लोगों को मजाक उड़ाया, वही लोग एक दिन आपको सल्यूट करें। कोई मंत्री बन गया, कोई मेरे बन गया, वो तो भले ही करेगा, लेकिन एक साबुन से एक लड़की, you know, you understand what I'm saying? आपको कल कोई सल्यूट मारेगा ना, मेरे अंदर मैंने कुछ किया अपने लोगों को, that for me is an achievement. I don't know you, but I still love you. I don't know you, but I still love you. I have always loved you. And I'm 47, 48, I'm getting old. I'm getting old. I don't have so long to live. When I was 20, 25, 50 साल जीवन का, अब 15 साल, 20 साल। लेकिन अब जितना भी साल बाकी जिंदगी में, या फिर बेवकूफ बनकर किसी को मार के नफरत करके करो, या फिर अपने लोगों को कितनी रिकॉर्डिंग चलाएंगे। अब इतना केयरफुल होना पड़ता है मुझे बुद्धि के लिए, अपना लोग अच्छा मैं हूं, लेकिन अपने लोगों को सक्सेसफुल देखकर, to make you happy, to make your parents happy, to make your friends happy. If I can get happiness in that, then for me, it's a life benefit. Now you are 40 right? 45. Some of you will pass. Some of you may not pass. Some of you may become top. Somebody may be middle. Somebody may be below. But it's a start, na? In my school, there were 48 students. Today, Bubagra is invited to Oxford to speak. Cambridge. I've spoken in Cambridge. I've spoken in Oxford. I've spoken in Harvard. But in a class of 48 students, sometimes I speak 25. I was never in the top 10. But today, in the class of 48, I'm probably in the top 2.
Not because of whatever is in class. Because here and here I wanted to improve myself. So some of you may do very well, some of you may not do very well. होता है. हम लोग कोई रोबोट है नहीं कि हर दिन नंबर 1 बन जाए. लेकिन that you still can love yourself despite coming last is a quality that you should have. So don't worry about success and failure. You should never worry about success and failure. वो तो होगा जिंदगी में. लेकिन जो लोग को लगता है कि मैं नंबर 1 होने से क्लास में ही मैं बेस्ट हूँ, वो सबसे बड़ा मूर्ख है, बेवकूफ. क्योंकि आपको क्लास में नंबर 1 नहीं, आपको जिंदगी में, सोच में और आपके एटीट्यूड में नंबर 1 होता है. तो एटीट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड अगेन आई कम बैक, योर एटीट्यूड शुड बी टू स्माइल, टू लव, टू स्प्रेड पॉजिटिविटी. और जो नेगेटिविटी है उसको मार्केट में एक डस्टबिन में निकाल के रोज डिलीट करो नेगेटिविटी को और पॉजिटिविटी को. दो चीज होगा. एक, योर लाइफ विल बी इजी. सेकंड, when you do not have hatred, your output will be much better. I started this entire mission in the tank celebration. हम लोग को मीनिंग कैसे हो जाता है? हम लोग वीडियो में देखते हैं. ये आगे मुझे लगता है कि मैं आपसे 2 साल से मिलने की कोशिश करता हूँ. चलो बात करो, प्रेम में कोई रोक नहीं सकता. बात किया और बात यहाँ तक लोग. ये साल 40 का शुरू है. नेक्स्ट ईयर हम लोग 70 करेंगे, उसके बाद 100 करेंगे. लेकिन करेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे. क्योंकि आगे आप कोई बोलेगा 45 में 1000 क्यों नहीं. मैं उनको एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ. मैंने तो 45 स्टूडेंट को इस बार चांस दिया है, सैलेशन चांस दिया है, सी के बाबू ने आके हमने तो चांस दिया. मैंने 45 में दिया, उन्होंने एक को भी हेल्प नहीं किया. लेकिन हमें सवाल पूछेंगे आपने 45 को हेल्प किया, 100 को हेल्प किया. जिस दिन 100 को करेंगे वो बोलेंगे आपने 200 को नहीं किया. क्योंकि उन्होंने जिंदगी में 2 लोगों को हेल्प नहीं किया, लेकिन वो बोलेंगे आपने 200 को नहीं किया. तो जो लोग दूसरे की गलती को देखते हैं वो अपनी गलती को छिपाने के लिए दूसरे में बुराई करते हैं. दिस शुड नॉट बी. Am I right? And I tell you, you are very important. You know why? Chief Minister of Tripura is waiting for me for the last 20 minutes. 20 मिनट से मुख्यमंत्री वेट कर रहा है. मेरे से उनका मीटिंग अपना पैसा. लेकिन क्योंकि आप लोग मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो, मैं मुख्यमंत्री को वेट कर रहा हूँ. और क्योंकि मैं कोई भी अवार्ड साइन करूँ, अगर आप लोग रेडी नहीं है, मैं जो भी बोलूँ, मैं जो भी भाषण दे दूँ, अगर आप लोग रेडी नहीं है, मैं जो भी दूंगा वो फिर से बर्बाद. It will go down the way. So please, not everything in life is politics. I am trying to unite the people of Northeast by creating one Northeast. I am trying to meet people from Nagaland. I am trying to meet people from Manipur. I am trying to meet people from Meghalaya, Khasis, Davos, Jaintias. I am trying to meet Maithils, Kukis, Nagas, Arunachalis, Dimasas, Bodos. People who are Hindu, Muslim, Christian, everyone Buddhists. Make them understand कि अगर हम लोग एक हो जाएंगे तो लोग हमें सीरियसली लेगा. लेकिन अगर हम लोग वही बात जो आज प्रद्योत बोल रहा है, वही बात मेघालय में कोई और बोल रहा है, ताकि आंध्र में कोई और बोल रहा है, नागालैंड में कोई और बोल रहा है, लेकिन वो नागा बन के बोल रहा है, वो कार्बी बन के बोल रहा है, वो खासी बन के बोल रहा है, गारो बन के बोल रहा है, देते बन के बोल रहा है, डिप्रेसा बन के बोल रहा है, कोई कोच राजवंशी बन के बोल रहा है. लेकिन हम लोग अपना अलग अलग में एक ही बात बोल रहे हैं. लेकिन अगर हम लोग एक साथ if we come together and speak as one, Rahul Gandhi and Amit Shah both will have to take us seriously. But if we speak as individuals, you will never be successful. We have tried it as individuals for 75 years. We have tried to speak
as individually. But collectively, if we speak, maybe we find there's something better than that. So that is the power of Hansa. And Hansa cannot be political, it has to be society, Loha. Just when it Hansa, some people here, some of you are very early. Hansa is not an anti-anybody word. Hansa means एकता. आपको एकता बोली हम अरे एकता का नहीं वैसे Hansa में क्या हमने बोला है Hansa करो आगे बढ़ने के लिए हमने नहीं बोला Hansa करके किसी को मारो लेकिन मीडिया में क्या आता है Hansa मतलब विकास एक होगा तो बिल्कुल को मारेगा वो Hansa नहीं होता है वो कुछ और होता है लेकिन आपको भी हमारा सेंटिमेंट समझना चाहिए और हम लोग को भी अपना सेंटिमेंट उनको समझना चाहिए am I right? am I right? because किसी का घर जलाने से अपना घर नहीं जलेगा अपना चूल्हा किसी का घर जलाने से नहीं जलेगा and I think that the more you all, not politicians, you all, the more I speak to you, the more we will be stronger. And now I don't want to surround myself with politicians. I want to surround myself with people like you all. That way, C.P. Babu called all the retired IAS officers, DCS officers. And I started spoken. And you know what I told them anything? अगर आप लोग मेरे साथ पहले से होते और पॉलिटिशियन मेरे आमने सामने नहीं होता तो मैं बहुत सी जिंदगी की क्योंकि पॉलिटिशियन को सीट चाहिए उनको वोट चाहिए वो वही बोलेगा जो उनकी फायदा चाहता है और मैं राजनीति में सीट और वोट के लिए नहीं आया वरना मैं खुद ही इलेक्शन लड़ता मैं खुद ही मंत्री बन जाता चीफ मिनिस्टर या एमपी बन जाता मैंने अपने लिए आज तक कुछ नहीं मांगा ये वन ऑफ पार्टी में भी अपने लिए एक पोस्ट नहीं मांगा क्योंकि मेरा एक्चुअल अचीवमेंट होगा जब मेरे लोग प्रोग्रेस करेंगे और मुझे एक ही सीट चाहिए आई नीड वन सीट यू नो वेयर आई वांट टू सीट आई वांट टू सीट इन हेवन एंड दैट कैनॉट कम फ्रॉम वोटिंग दैट हैज टू कम फ्रॉम डूइंग गुड थिंग्स एंड ऑल ऑफ यू some of you may believe that you are atheists but I'll tell you something we will all die one day हम लोग सब मरेंगे और जब मरेंगे कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा उसके लिए आपके पास कितना पैसा हो कहाँ में आपका जन्म हो उसका कोई वैल्यू नहीं है आपने अपनी जिंदगी में क्या किया कैसे आप थे that will matter so first of all whether you are successful as officers IAS officers whatever you have to be good human being. Then again, I come back to be a good human being. You have to love each other and to smile. And all of you, मैं तो बोलता हूँ मेरे आप खत्म हो गए. You have such lovely sensitivity. दिखाओ करना देखा. हंसो. ₹1 आपका पॉकेट से नहीं जाएगा, लेकिन आपको अच्छा लगेगा. Right? So, having said all that, Shailesh, I want to suggest you one thing. Today, because of various reasons, I have to leave. But I want to come to your tiny coaching center, and I want to meet all these 45 people and spend at least 2 to 3 years. ठीक है? हम लोग मस्ती भी करेंगे, बात भी करेंगे, गपशप भी करेंगे. क्योंकि हमेशा किताब देखने से ये नहीं पता चलता. कभी-कभी when you smile, you talk, when you have fun, that's when something new comes, new ideas. So I want to do that. Maybe next month, this month I'm offering and maybe we can celebrate early evening together, maybe we can celebrate early Christmas together. Maybe we don't need an occasion. ऐसे आके कुछ नहीं है आके बैठ जाओ क्लास में मैं भी सीखूंगा तो सेलिब्रेट ठीक है लेकिन it is important for me and it is important for you. Okay? If you have any questions, किसी कोई सवाल है तो you can ask me as well. I'll be more than happy to answer. अब क्या करना है?
If anyone wants to ask any question, please feel free. Otherwise, I have to go meet the Chief Minister. ठीक है? Everything is okay? हाँ? One lady was asking questions. हाँ? Bubagra, first of all, I am very thankful for this opportunity. I really love you. I love you too. What's your name? My name is Chan. Chan? Yes, Chan. Chan. Nini Parvo? Manai. You are very handsome person. Thank you. I sometimes want to play as mental instability sometimes, and parents also sometimes. And as my father is long working there. So how to go about this mental instability while preparing the civil service? I think that you have to start by saying that the ultimate destination is not to become an IAS officer. Your ultimate destination should be to be a better human being. So don't put too much pressure on yourself. When you try something very hard, it never happens. But when you take it easy, you are focused, you work hard, but don't make it your only aim in life. Your aim in life should be to be happy and to do something which will make others happy. And the best way of doing that is by being genuine. So don't look at other people and judge your success. Look at yourself, judge yourself. Don't look at other people's opinion to judge you. You are your best judge for yourself. And do that. Success and failures will happen. But you should not fail in your conscience and your integrity. Today, I can be the most successful person if I compromise. But I will be the saddest person if I compromise. So, do I want to be successful in terms of money? Or do I want to be happy because of what I have done? The choice is yours. You will always have choices in front of you. The road you have to take is completely based on your principle. I can speak for myself. I can never let my people down for money. I can negotiate for my people for their rights, but I cannot sell my people's interests for money. So for me, it's easy because maybe I have money. But then what is that money if you have lost respect in the eyes of the other person? And I can't afford to do that. I cannot, it's not me. So you also will have your own tension, your stress. But when you walk into your classroom, happy, believe me, your brain works for you. And sometimes you walk into your own marriage, sad, and marriage will fail. Take it. So approach life with a certain amount of clarity. ये माथा में क्लियर करो. आज मैं यहाँ में ऐसे जाऊँ. और जब ऐसे जाओगे, तो मैं 99.9% काम अच्छा करूँ. मैं अपने तजुर्बे से बोलूँ. I'm talking this from my experience. मैं भी आपके एक्सेस था. उस समय किसी ने मुझे गाइड नहीं किया. वरना मैं बहुत चीज और अच्छे से करता. If you really love me, if you love me, Yes, sir. then don't love me, love yourself. Yes, sir. If you love yourself, you will be able to love others. Okay, that is it. How much? Can I? Oh, there is one. I can hear you. Shikar to namaskar. अच्छा बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन आपकी बात पे वो आंसर मिल गया बस एक सवाल पूछना था कि कंसिस्टेंसी ये 2 साल के जर्नी में कैसे मेंटेन करना है कंसिस्टेंसी आपको अगर मेंटेन करना है
टाइम में आपका इंफॉर्मेशन बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका दिल है तो 2 साल 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। अगर शौक है, और अगर शौक नहीं हो रहा, आप दबाव में करोगे तो 2 साल क्या 2 महीने के अंदर ही आपको लगेगा यार ये मेरा नहीं है। तो आपको जो भी करना है आप वही कीजिए जो आपको ठीक लगे, ना किसी को। ये पहला। दूसरा, यही अप्रोच आप जिंदगी में कभी कभी हम अपना व्यवहार बदलते हैं क्योंकि हमको पॉपुलर बनना है, लेकिन आप पॉपुलर बनोगे लेकिन आप अंदर से नाखुश हो तो क्या करेगा? एक ही शरीर है, एक ही जिंदगी है, अपने बलबूते में जियो, ना कि किसी और के लिए। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि सबसे पहले आप आपका असली दोस्त हो उसको पहचानो, क्योंकि आज इस जिंदगी है कि आपको मदद अलग कर चुका। एट दिस स्टेज आपके साथ कोई भी दोस्त बनेगा इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आप IAS ऑफिसर हो या PCS ऑफिसर हो या मंत्री हो, वो आपके साथ